Glad that you all made it to the session, and let's begin our conversation for today. We got a lot of interesting things to talk about, uh, and most importantly, बहुत जरूरी जो एक एलिमेंट है, ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम का बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, करंट अफेयर्स. अब ये करंट अफेयर्स इज ए रादर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन. पूरे अगर उसको चैलेंज को अगर हम देखें यूपीएससी एग्जाम में, इट इज नॉट क्लियर कहाँ स्टार्ट होता है कहाँ खत्म होता है. इट इज नॉट क्लियर कितना करना है कितना नहीं करना है. इट्स लंबा चौड़ा एक प्रोजेक्ट है, एंड इट carries on throughout the preparation. Going to try and simplify it. I am going to try and simplify it by giving you some very important frameworks. आज मैं कुछ frameworks दूंगा, कुछ बहुत interesting gifts मैं आज announce करूंगा जो अभी तक किसी के साथ share नहीं करे गए हैं. Never again. This will be the first time I do that. And we will have the all the relevant discussion जो करनी है ना. हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. ऑब्वियस चीजों पे टाइम हम नहीं बिताएंगे. हम सीधा काम की बात पे जाएंगे. एंड वी विल फोकस ऑन गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. जितना भी टाइम है हम उसको यूटिलाइज करेंगे. लेट अस बिगिन एंड लेट्स वेस्ट एब्सोल्युटली नो टाइम. तीन तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने आइडेंटिफाई करी हैं. There are three problem statements which you will have with regards to current affairs. I'll give you very clear, direct, distinct, and simple answers for them. First problem statement is, do you need to read the newspaper? Do you need to read the newspaper? The answer is, it depends on your situation. Be honest with yourself. अपने आप से खुद एक बारी honestly पूछिए, क्या मेरे पास टाइम है? Are you a working professional? Can you afford to read the newspaper? हो पाएगा? जरूरी है. It is important. It is definitely worthwhile. एक valuable investment है. इसमें कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है. न्यूज़पेपर का अल्टीमेट फायदा क्या है? द अल्टीमेट फायदा ऑफ द बेनिफिट ऑफ द न्यूज़पेपर इज बाइट साइज्ड एनालिसिस मिल जाती है. जब हम करंट अफेयर्स वगैरह के वो देखते हैं, कंपाइलेशंस देखते हैं, इट डजंट गिव अस द कॉन्टेक्स्ट. उसकी प्रॉब्लम ही ये है. उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी डेटा होती है, उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, और वो इतने कंडेंस नोट्स देख के पढ़ने का मन नहीं करता है. मतलब आई नेवर फेल्ट लाइक रीडिंग देम. मुझसे आज तक नहीं पढ़े गए वो, एंड आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद देम एट ऑल. तो धीरे धीरे जो चीज हो जाती है उसका कोई जवाब नहीं है. इट बिल्ड्स, नॉलेज बिल्ड्स. दैट इज द मेन थिंग. अच्छा, अगर नहीं हो पाएगा, सपोज नहीं हो पाएगा, वी गो ऑन टू द सेकंड स्टेज. We go on to something else, right? It doesn't really mean if you're not able to read the newspaper daily, that means you're doomed. You are not doomed. You are not doomed. This exam is so vast कि किसी ना किसी के कुछ ना कुछ advantages, disadvantages होंगे. Either you will have some advantages with regards to something or the other. It's fine, okay? Figure it out. If you can afford the time, invest it in reading the newspaper. That is one. Number two, which sources are enough? Most of the question that I here in question number two I've already answered. Which newspaper is required? It doesn't matter. Really doesn't matter. Get everything that you need and get it over with. You like Indian Express, you read that. You like the Hindu, you read that. It's up to you. Read the newspaper which talks to you more. Read the newspaper which you feel comfortable with. Read the newspaper which can develop into a habit. Read the newspaper which you see will become a लाइफस्टाइल. वो न्यूज़पेपर हमने पढ़ना है जो हमको पता है कि ये लाइफस्टाइल में मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ. मुझे हर रोज पेन फील नहीं हो रही है. That's simple. That's a simple question. That's a simple answer to your question there. Moving on. Now this is important. How to make notes for current affairs. ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसी के बारे में हम थोड़ी आज बात करेंगे. We'll talk about it in detail. ये नोट्स वाला जो इशू है, it is closely correlated with a larger issue. Larger issue ये है, करंट अफेयर्स की जो वॉल्यूम है, एक्सट्रीम वॉल्यूम है इंफॉर्मेशन की. आप अखबार खोलोगे तो हर एक पेज पे 10-10 हजार वर्ड्स लिखे हैं. कितना पढ़ोगे, कितना कैप्चर करोगे? और अगर कैप्चर करोगे तो याद कैसे करोगे? हाउ विल यू कैप्चर वन? हाउ विल यू, इफ यू कैप्चर, हाउ विल यू मेमोराइज? हाउ विल यू कैटलॉग? राइट? We don't normally have any system of our cataloging. If you start to make notes of the newspaper, Priyanshu, if you start to make notes of the newspaper, Akansha, it will take the whole day. पूरा दिन लग जाएगा, पूरी जान लग जाएगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास बाकी चीजें करने के लिए. Right? So we have to get on with it, and we have to. This is exactly what I'll do, and I will show you. Now, getting on with business. There are two rounds, ladies and gentlemen. Two rounds to be considered. The first round is obvious. The first round is called the filtering protocol. There are two rounds in our newspaper reading. The entire process must be completed within 35 minutes. 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें. हो सकता है पहले 1 या 2 दिन में ज्यादा टाइम लग जाए.
but it should not take a while. It should not take longer than that. Ravi Kapoor, you should go and watch the match. It is better. You go and do that. The people who know that they are investing their time here should do that, right? I don't want you to miss the match. You do it. You should definitely go and do that. Now, the first round is the filtering protocol. The filtering protocol is when you filter. Very simple. इसमें कोई logic, कोई ज़्यादा magic नहीं है. एक ही rule है. Filtering protocol में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. Filtering protocol is basically this. You go through the newspaper. Do not read anything other than the heading and the subheading. 1. Do not read anything other than the heading and the subheading. Ignore all the ads. Ignore all the ads. आप समझो इस चीज को. न्यूज़पेपर में जो एड्स होते हैं रंग बिरंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के और बाकी चीजों के, दे आर डिजाइंड टू कैप्चर योर अटेंशन. उनको इग्नोर करने में एफर्ट लगेगा क्योंकि जिस तरीके से वो प्रेजेंट करे जाते हैं, द वे दे आर प्रेजेंटेड, इट नेचुरली विल अट्रैक्ट योर अटेंशन. The thing you need to figure, the thing you need to worry about in the first round is your attention getting grabbed. अपनी attention को grab नहीं होने देना. उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए. माई ट्रिक, छोटी सी ट्रिक ही है, ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा कुछ जादू की चीज नहीं है. मेरी ट्रिक ये है कि मैं उस पर एक बॉक्स लगा देता था, एक्चुअल फिजिकल बॉक्स. मैं एक्चुअली फिजिकल बॉक्स लगा देता था उसके आसपास, ताकि जब मैं दूसरी बारी दूसरे राउंड में आऊं तो मुझे पता हो मुझे और कुछ देखना ही नहीं है. मुझे देखना ही नहीं है. अगर मेरी बार बार नजर जा रही है पूरे के पूरे पेज में, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. अगर मैं उसको पढ़ने लग गया, इफ आई स्टार्ट टू रीड इट, इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देन आई हैव टू गो थ्रू द होल थिंग. फिर मुझे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा. आई डोंट वांट दैट. इन द फर्स्ट राउंड इन द फिल्टरिंग प्रोटोकॉल, वेरी सिंपल. इट शुड टेक नो मोर देन 5 मिनट्स. रीड ओनली हेडिंग एंड सब हेडिंग. Completely move ahead, and if you can physically mark it. Moving on. This is the important part. In the filtering protocol, like I said, what I've said is one thing. Apart from this, I don't need to repeat it. You are all smart. Political pieces नहीं पढ़ने, state news नहीं पढ़नी, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं. इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. हमको इन चीजों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सब पता है. Let us move on to this. Now this, ladies and gentlemen, is the daily feeder page. This is the daily feeder page. This page is a format. It is a format for capturing current affairs daily. It is a format for capturing current affairs daily. It is how you make notes. It is a fill in the blanks format. I have sent this to you in your assignment. In your assignment, you would have received this. You can simply download it and you can take printouts of it. इसके आप प्रिंट आउट ले सकते हो. बेसिकली ये पेज है. एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और आपको बताऊंगा अभी आगे जाते जाते. इसका एक नया वर्जन भी है एंड आई विल गिफ्ट इट टू यू. दैट इज पार्ट ऑफ आवर गिफ्ट. सो this is the daily feeder page. I have sent this to you on email. Already sent it to you. So Kanya, if you check your email in the assignment, it's already there. There are now parts to it. And let us see what those parts are. After you have filtered it, 5 मिनट हमने दे दिए न्यूज़पेपर को, हमने फिल्टर कर दिया. उसके बाद इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. पहला फिल इन द ब्लैंक है ये इवेंट स्नैपशॉट. इवेंट स्नैपशॉट कह रहा है, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट. आज का अखबार हम देखेंगे. आई विल लुक एट टुडेज न्यूज़पेपर and I will tell you exactly how to extract this information. This is the extraction protocol. The extraction protocol is when we minimize the time spent, extract the relevant information, move on. Get the relevant information, don't waste a single second, move on. Close it. It's over for the day. What do? We take a news item. आपने कोई भी news item लिया, first fill in the blank will be event snapshot. Event snapshot means I just want you to annotate that event. सिर्फ छोटा सा एक वो कर देना है हमको. We just have to write in 2 words क्या है event. Event की importance, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें no magic here. The important one is this, second one. This is the significance finder. Significance finder, and I will again demonstrate इसकी significance क्या है. Significance finder की significance ये है कि when we read newspapers, when we read articles in the newspaper, you will always find that the journalist and the newspaper or the whoever is writing that piece will write something or the other about the importance. If it is about India Ukraine, for example, it will be a news item कि भी India Ukraine में bombing हो गई, there is bombing in Ukraine or something like that, but it will say something else. It will say Indian students are trapped over there. It will say maybe it has an effect on gas prices in India. It may say something about a pipeline. It may say something about our relationships with Russia. वो significance चाहिए हमको. ये सिग्निफिकेंस खुद सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज मेंशन्ड. वो हमको ढूंढनी है, बस वो लिखना है हमको इसमें.
This is what we are looking for in that second fill in the blank. The third fill in the blank is very simple. ये बाद में काम आएगा, अभी हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा. Theoretical underpinning is we just correlate it with the type of subject it is related to, nothing fancy. इसकी relevance बाद में पता चलेगी, ये एक अलग exercise से correlate करता है, but still it helps us organize things. It helps us organize it, right? The last and the most important section is the keyword analyzer. The keyword analyzer. And here I will demonstrate. Let me go back to the extraction protocol. Let me share my screen and let me show you today's e-paper. Today's e-paper, let me show you. And let us try to capture. जितना हम कैप्चर कर सकते हैं एक बारी समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है. मैंने आज का न्यूज़पेपर खोला. मैंने फर्स्ट राउंड में I spent some time in filtering it. और फिर मैंने ये देखा. This is the first thing I saw and I found it to be relevant for UPSC. मुझे ये UPSC के लिए relevant लगा क्योंकि जुडिशरी है, कोलिजियम है और पॉलिटी में डायरेक्ट यूं का यूं टच होता है. डायरेक्ट पॉलिटी है ये, इसमें कोई वो नहीं है, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. वी नो इट इज इंपॉर्टेंट. हमने इसमें इवेंट स्नैपशॉट करा. इवेंट स्नैपशॉट क्या है इसका? जुडिशरी, कोलिजियम, पेंडिंग. बस 3 वर्ड जो पूरी की पूरे इशू को एक्सप्लेन कर देते हैं और उससे ज्यादा नहीं चाहिए. जुडिशरी, कोलिजियम, पेंडिंग. आपको जो ठीक लगता है वो यूज करिए. यू यूज द वर्ड्स दैट यू लाइक. यू यूज द वर्ड्स दैट मेक मोर सेंस टू यू. यू जस्ट एनोटेट इट इन योर लैंग्वेज. सेकंड, सिग्निफिकेंस फाइंडर. सिग्निफिकेंस फाइंडर, ये जो इशू है, वॉट एवर दिस इशू इज, वेदर और नॉट इट इज टेलिंग अस समथिंग और नॉट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों है ये फ्रंट पेज पे, व्हाई इज इट ऑन द फ्रंट पेज, हु कैन टेल मी दिस. 2-3 रेलेवेंट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे. आई कैन सी 2 or 3 रेलेवेंट इश्यूज. व्हाट आर दे? वन इज ऑब्वियस, पेंडेंसी. वन इज ऑब्वियस विच इज पेंडेंसी. द सेकंड इज, देखिए सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है. Many a bright legal mind willing to sacrifice their law practice have fallen victim. It discourages talent. It discourages legal talent. एक सबसे बड़ा इशू तो है ही वो पेंडेंसी जो है जुडिशरी में. दूसरा है कि ये टैलेंट को भी अंडरमाइन कर देता है. तीसरा आपको मिल जाएंगे इसमें. ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस फाइंडर. कीवर्ड एनालाइजर में क्या लिखेंगे हम? हु कैन टेल मी सम नाइस कीवर्ड्स हियर? एक ऑब्वियस कीवर्ड कोलिजियम है. कोलिजियम इज एन ऑब्वियस कीवर्ड. आप थोड़ा सा और पढ़ोगे आपको और मिलेंगे. हो सकता है इट इज नॉट नेसेसरी यू विल फाइंड 3 कीवर्ड्स. You will find maybe 2, maybe 3. So if I was in your position, अगर मैं ये आर्टिकल एनालाइज कर रहा होता, मैं इमीडिएटली इसकी सिग्निफिकेंस लिखता. I would write the significance. I would move on to keywords. I would choose this word Attorney General. Definitely, I would choose this word Attorney General. I would choose the word collegium. Definitely, I would use the word collegium. I would choose it and then I would move on. I would select 2 items from here. I would move on. I would waste literally no time whatsoever. Right? This would have been my one column in the daily feeder page. Let me show you the example of another article. न्यूज सेक्शन में जाते हैं. एक आर्टिकल दिखता है, इंडो पैसिफिक रीजन अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंसी आर्मी चीफ. जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लग रहा है. आर्मी चीफ्स मिल रहे हैं, अमेरिकन चीफ भी है एंड इट सीम्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. हमारे स्ट्रेटेजी और जियो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस है इसमें, हमारे पॉलिटी से रिलेट करता है, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेट करता है. जाहिर सी बात है कि ये पढ़ना चाहिए हमको. हमने ऑलरेडी ये फिल्टर आउट कर लिया होगा. इसको जूम करते हैं. इवेंट स्नैपशॉट क्या है इसका? इंडो पैसिफिक रीजन मीट. सिग्निफिकेंस फाइंडर क्या है इसमें? इस आर्टिकल में, इसको मैंने पढ़ा आज और इसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स लिखे हैं. अब सिग्निफिकेंट फाइंडर तो ऑब्वियस है, सिक्योरिटी इशू है, चाइना को काउंटरैक्ट करना है. इंडियन ओशियन पैसिफिक रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इट मे टर्न इनटू अ थ्रेट. बट टेक अ लुक एट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड. ये देखिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस. Look at this. So focus here on security challenges and read this word here. Addressing the conference, the defense minister said the Indo-Pacific has no more than a maritime construct but a full-fledged geostrategic construct. Noted that the region was facing a complex web of security challenges including boundary disputes and piracy. ये 3 significance यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिखे हैं. 3 important significance एक पैराग्राफ में यहाँ पर लिखे हैं, including some very interesting terminology.
फुल फ्लेजेड जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्स्ट्रक्ट। सिग्निफिकेंस फाइंडर में मैं ये जरूर लिखता, आई वुड डेफिनेटली कैप्चर दिस। नाउ कम्स द कीवर्ड। अब कौन से कीवर्ड यूज करोगे आप इसमें? विच कीवर्ड विल यू पिक? लेट मी शो यू सम नाइस कीवर्ड्स है, वेरी नाइस कीवर्ड्स। One keyword that I am finding again and again is this SELF, self, Senior Enlisted Leaders Forum, IPAC. Self is one keyword जो मैं definitely capture करता. I would definitely have it noted. पता नहीं कब काम आ जाता, but important लग रहा है इसलिए मैं I would have noted it. The second keyword that I find really interesting is this word youth abhyas. Youth abhyas last paragraph में है. The 19th edition of the Indian-US bilateral army exercise Youth Abhyas. हालांकि even though this comes into GS, or you will be able to see this in many places, but organic तरीके से अगर कोई चीज capture हो जाए तो it is best. I would capture these two keywords at least. If you find some other important keywords, you find them, but that's it basically. मेरा हो गया. I'm done with this particular piece. मैंने इस piece को capture कर लिया जितना मुझे करना था. Now let me show you. So I have given you the demonstration of two important articles. But daily feeder page को एक बारी देखते हैं फिर से. एक बारी daily feeder page को देखते हैं. देखिए daily feeder page में साहिल, हर्षा, भाव्या, are you seeing the bottom? इसके bottom पे देखिए क्या लिखा है यहाँ. बॉटम पे एक कॉलम बना हुआ है मिसलेनियस का, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डेथ्स. स्पोर्ट्स, डेथ्स, अवार्ड्स. अब अवार्ड्स में आज आज कौन बताएगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड क्या है? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है. बहुत फेमस अवार्ड है. हर मतलब इट्स लाइक लिटरली द व्हाट यू कॉल द one of the favorite questions of UPSC. Although they don't have very many favorite questions, but this is surely one of them. And I'll show it to you. I will show it to you. I will show you that article, but let me see whether you can actually guess at it. Yes, दादा साहेब फाल्के. वेरी गुड वेंकी, बहुत बढ़िया. अब दादा साहेब फाल्के है जरूर, फॉर श्योर. इट्स लाइक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इट विल बी एवरीवेयर. जब हम पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन वगैरह तो हर जगह लिखा होगा. बट फिर भी जो ऑर्गेनिक तरीके से हम आज कैप्चर कर लेंगे वो बहुत देर तक याद रहेगा. ये रहा बॉटम पे दादा साहेब फाल्के वो. Here it is. वहीदा रहमान गेट्स इट. इंपॉर्टेंटली शी गेट्स इट फॉर 2021. 2021 लिखना जरूरी है यहाँ पे. दादा साहेब फाल्के किस चीज के लिए मिलता है वो हमको पता चल जाता है. खत्म बात. वी आर डन. हमने वो यहाँ पे कैप्चर कर लिया. दिस इज हाउ वी यूज द डेली फीडर. दिस इज हाउ वी यूज द डेली फीडर. कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. मैं आपको फिर से लेट मी जस्ट गिव यू ए समरी. हमने न्यूज़पेपर लिया, हमने उसके 8-10 आर्टिकल चूज करे, हमने फिल्टर करा बहुत जल्दी. हमने 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया उस फिल्टरिंग में. हमने वो खत्म करा. हम एक्सट्रैक्शन पे आ गए. हमने एक्सट्रैक्शन में इन 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं करना. हमने इवेंट स्नैपशॉट, सिग्निफिकेंस फाइंडर, थियोरेटिकल अंडरपिनिंग, कीवर्ड एनालाइजर, जैसे ही ये कैप्चर हुए नेक्स्ट. उसकी डिटेल नहीं करनी, उसका कुछ नहीं करना. ये हमारा डेली का काम है. ये हमको 35 मिनट्स में खत्म करना है. दिस इज व्हाट वी मस्ट डू इन 35 मिनट्स. 35 minutes flat. It should not exceed that time. If it exceeds 35 minutes and if you go on to 40 minutes, 50 minutes, it is not worth it. And Priyanka, this question of Mahi, you find 4 articles, fine, you can write. Doesn't matter. But normally you will not find. And I'll tell you why. If an article is important, if an issue is important, it will repeat. The newspaper, the journal, whatever, will cover it more and more. बार बार आएगा वो. अगर आपको 8-10 मिल गए तो आपको 2-3 दिन में नहीं मिलेंगे 10. नहीं 90 मिनट्स नहीं लगने चाहिए. 90 मिनट्स इज टू लॉन्ग. 90 मिनट्स इज नॉट सस्टेनेबल. 90 मिनट्स नहीं करना है. एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फोमो. साहिल 1 घंटा इसलिए लग रहा है, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम. इसका जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्मेट is it should block you from FOMO. I am giving you a restricted framework so that you don't go beyond it, because you can get lost in this. You can spend a lot of time analyzing this. There's no end. Editorials, you will find that the editorials are mentioned
editorials we are treating the same way. There is another session which I will conduct for editorial analysis. There is a separate way, but right now, can you just get used to this format, because this will make your life very, very easy. This will make your life very, very easy, and it will simplify things. What did you do essentially? You extracted certain keywords. आपने कुछ keywords करे. You know what it will look like when you're done? It will look like this. ऐसा दिखेगा. This is how it will look once you are done. And this is how you will take your notes. Now, you see that in this row over here, you captured some keywords. आपने कुछ keywords capture करे. और आप हर रोज कर रहे हो वो keywords. You are capturing those keywords every day. Correct? Why are you capturing those keywords? Why? You are capturing those keywords because after 14 days, आपने 14 दिन ये कीवर्ड कैप्चर करे, after 14 days you will do this. After 14 days you will take the keywords that you had captured. अभी मैंने एक कीवर्ड चूज करा था वहां पे, SELF, self. I had picked that keyword. I had also picked the keyword called युद्ध अभ्यास. मैंने युद्ध अभ्यास करा था. मैं 2 हफ्ते में एक बारी I will only do this twice a month or fortnightly or twice a month. I will spend some time, a few hours, in analyzing all the keywords that I had accumulated. And I'll tell you how. Take a look at this format. It's interesting. This has a number of interesting features. You put the keyword here in keyword feeder, and then you do a 360-degree big picture condenser. 360 big picture condenser क्या है? 360 big picture condenser is nothing. It is saying जो keyword है, take it, Google search it, Google image search it, Google news search it. 3 सर्च करने हैं हमको 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में. We have 2 to 3 minutes to search for one keyword because we have many keywords to analyze, because we have accumulated them for the past 14 days. You will do a 2 to 3 minute search. You will quickly search the word on Google. You will see what Google is telling you. Google will give you updated information, relevant नई information देगा वो आप देखोगे. आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे. आप Google images देखोगे. Let us see क्या होता है. If I analyze the keyword युद्ध अभ्यास, let us see क्या होता है. So suppose I take this and I go to google.com and I type in here युद्ध अभ्यास. It's already giving me some suggestions, but I'll tell you what I'm looking for. This is the result that it has thrown up. सबसे पहले मेरे को ये क्लियर कर दे रहा है कि इंडिया, अभी एक दिन पहले इंडिया का युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है. ये उस न्यूज में नहीं था. दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन द न्यूज. ये अलास्का में स्टार्ट हुआ है, वो मुझे पता चल गया. चलो अच्छी बात है. युद्ध अभ्यास आई गॉट टू नो. I will take a look at what it is, but I will not go into details. I will not click anything. मैं कुछ भी क्लिक नहीं करूंगा. मैं सीधा गूगल इमेजेस पे जाऊंगा. मुझे गूगल इमेजेस का क्लिक अलाउड है. ठीक है. I get an idea. It's basically, it seems to be mostly land warfare. इमेजेस मुझे ये बता रही हैं कि ये लैंड वॉरफेयर है, ये नेवल वॉरफेयर नहीं है. ये दिस इज नॉट नेवल वॉरफेयर. दिस इज नॉट एयर वॉरफेयर ऑल्सो. This is land warfare related. This is the best. Then I will go to news. In the news, it will give me something or the other, which I already found. ठीक है, 19th edition है, ये मुझे पता चल गया. बस मेरा हो गया. My search is complete. मेरी सर्च हो गई. कीवर्ड एनालाइजर की सर्च मेरी कंप्लीट है युद्ध अभ्यास के लिए. ऐसे मुझे सारे कीवर्ड्स करने हैं उस दिन. This is how I must do all the keywords that day. ये क्या कर रहे हैं हम? जो why we are doing this? क्यों कर रहे हैं हम ये? क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं, जब हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे इसको, तो हमको बहुत चीजें बताएंगे जो हम शायद मिस कर जाएं. हो सकता है उस न्यूज में ना आई हो सकता है उस दिन के न्यूज़पेपर में ना आई हो. राइट? दिस इज द थिंग. दिस इज व्हाई वी डू इट. दिस इज व्हाई वी डोंट डू इट एवरी डे. हम हर रोज नहीं कर सकते. हम हर रोज फिल्टरिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, डेली फीडर करेंगे, ये करेंगे हर रोज. दिस इज व्हाट वील डू. We'll capture the keywords
Every 14 days we will do this to the keywords. Let us take a look at some other governance perspective. It is saying governance perspective. ये governance perspective क्या होता है? What is the governance perspective? Governance perspective is ये एक बहुत interesting इसका एक feature है. इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. It will take a bit of time for you to understand what to write in this governance perspective. This is the perspective of the government as far as the regulation is concerned, and it changes. See, if it has to do with UPSC, governance perspective will tell me which ministry is involved. Which ministry is involved? What is the concern? Essentially, we already know it will be the Ministry of Defense. It may even be the Ministry of External Affairs. It may even be the Ministry of External Affairs. If I read an article about cryptocurrency, something new happens in cryptocurrency, cryptocurrency में कोई नई डेवलपमेंट होती है, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव क्या है? गवर्नेंस पर्सपेक्टिव ये है, कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इट, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन से रूल्स एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट का इस इशू पे कंसर्न क्या होगा, व्हाट विल द गवर्नमेंट कंसर्न बी. गवर्नमेंट का कंसर्न होगा ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस ना हो, बेनामी ट्रांजैक्शंस ना हो, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इलिसिट ड्रग एक्सचेंजेस, नारकोटिक्स ट्रेड. ये सब इश्यूज होंगे गवर्नमेंट के, ये हम सीख जाएंगे. ये है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव. It will develop, it will take time to develop, but the reason I put it here, the reason I put it is because आपको सोचने पे मजबूर करेगा. ये मेंस में बहुत काम आएगा. This will really take things to a completely new level. In mains you will engage, because you see the point of this section, governance perspective, the UPSC will want you to have an appreciation of the problems of the government. The UPSC wants you to have an appreciation of the problems of the government. They expect you to think like a civil servant. They will expect that you already think like a civil servant, but you are not civil servants. You have to become civil servants. But how do you develop that thinking without becoming one? This helps in that. That is why I put it. Okay. Now, critical insights, that's up to you. I have left it up to you. जो आपको critical insights में लिखने लिखिए आप. But this keyword analyzer page we do once every 14 days. But there's another very interesting thing. That now interesting thing which I have never shared, is the fortnightly pathfinder. The fortnightly pathfinder page, ladies and gentlemen. This is a very interesting page. I have included this in your assignment. In your assignment, you will see that I have given you this test. I will not show it to you. You must go and see it yourself. खुद देखिए क्या है और उसका आंसर दीजिए honestly. इंटरेस्टिंग चीज ये है, व्हेन यू सी इट, इट विल गिव यू एक कार्मा स्कोर. एक कार्मा स्कोर मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स का कार्मा स्कोर. दैट कार्मा स्कोर टेल्स यू वेयर यू आर गोइंग एंड इट विल सजेस्ट वेयर यू नीड टू गो नाउ. If it falls within this range, do this. If it falls within this range, do this. If it falls within this range, then do that. You will find that in your assignment. You will find it. I want you to figure it out. आप खुद देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए उसको. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बढ़िया चीज है. और इनफैक्ट ये जो पाथ फाइंडर है, फोर्टनाइटली पाथ फाइंडर, यू शुड कंटिन्यू टू गिव दैट. वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से, मतलब ऑनेस्टली आपको शीशा दिखा देगा वो. इट विल शो यू द मिरर. इट विल फोर्स यू टू बी ऑनेस्ट एंड इट विल गिव यू गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करता रहेगा. राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, coming to your gift. What is your gift? I have given you the assignment. You will, Priyanka, you just add the score, it gives you the karma score. You don't worry about the score correctly. Well, I completely have to, I believe you, and there is a Google form. I can always check. If you claim some score, I can always check. That's why I create this Google forms here. Now, interestingly, what is your gift, ladies and gentlemen? No, your gift is not what you are guessing. No. This is not what you are guessing. Your gift is something different. Your gift is something different. Here it is. I will actually show you. Let me just show it to you. I figured that you would need some form of digital note making. I have created a digital diary. Now you don't need to print it out. You can type here. You can keep saving pages of this. You can keep saving
पेजेस ऑफ दिस। इसमें फॉन्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कीवर्ड यहाँ लिख सकते हो आप, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, and there is place for notes also, and here in fact in the notes you can actually copy paste links। आप अगर ई पेपर पढ़ते हो, अब इसके you can continue, you can just keep इसकी कॉपीज बनाते चले जाओ, keep making copies of this and keep keeping a catalog। अब ये आपके पास अवेलेबल है, ये गिफ्ट है आपका, दिस इज योर गिफ्ट, ये आपका गिफ्ट है, ठीक। इसके अलावा what about what apart from this, apart from this I am going to give you the compilation of July, जून जुलाई अगस्त, बहुत डिटेल्ड कंपाइलेशन है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते फॉलो करंट अफेयर्स, तो अगर बैकलॉग है तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आई विल गिव यू द कीवर्ड एनालाइजर पेज ऑल्सो, कीवर्ड एनालाइजर पेज, डिजिटल डायरी डेली फीडर पेज एंड पाथफाइंडर, तो खैर इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर दिस थिंग, एंड आई विल गिव यू द कीवर्ड एनालाइजर। सो दिस इज योर मेन गिफ्ट, यू विल गेट दिस, ये मिल जाएगी आपको। इसके पास जस्ट कॉपीज बनाते रहो, आप कॉपीज बनाते रहो, कंपाइल कर लो, आपका सेव हो जाएगा सब कुछ एक जगह, और आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे कुछ चीजें। ऑल्दो मैं आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज व्हेन आई हैड दिस मेड इट वाज नॉट इजी, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ये एडिटेबल पीडीएफ है, इसमें टेक्स्ट बहुत बड़ा आता है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मैनेज, इट्स नॉट परफेक्ट बट इट इज स्टिल क्वाइट अ यूजफुल थिंग। आपके काम आएगी ये चीज और आपकी लाइफ इजी कर देगी। दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज योर गिफ्ट। आई हैव एक्सप्लेन टू यू what I wanted to say. I have given you the protocol. I will quickly summarize it, quickly summarize it, and then we'll end. Filtering protocol है 5 मिनट का। We are not wasting time on anything. हम heading सब heading पढ़ रहे हैं, select कर रहे हैं, और जरूर मतलब we are मेहनत कर रहे हैं, हम ads नहीं देखेंगे, हमको देखने ही नहीं है, ads नहीं देखने, कुछ और नहीं देखना, जो select करा है वो देखना है बस। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल में डेली फीडर पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। daily feeder page, we are using this daily feeder page and its format, and we are capturing, extracting information. No more than 30 minutes in this, no more than 30 minutes. I don't care how you do it, you must increase your speed, you must increase your level. I expect you to now increase your level. 1 घंटा नहीं लगना चाहिए, 30 minutes is all I am going to give you, no more than that. उससे ज्यादा लग रहा है तो we are spending too much time. We'll come to editorial analysis in a different session. आज के लिए बहुत सारा है ये, it's a lot of information, lot of formats. Once you fill the daily feeder page, it will look like this. You will have your keywords here. After 14 days of your keywords, keyword analyzer page, one effort, maybe one full day given to the keywords will just make you so thorough, इतना thorough कर देगा आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होंगी। जब at the end of the exam, you actually at the end of your preparation, you look at your current affair compilations, etc., you will know most of the things. This is the way you actually do it. This is the whole scene behind it, this is the whole effort behind it, and I hope that you will do justice to it. I hope that you will do justice to it and you will be able to get my gift. I don't discriminate at all. If you attempt it, आपने attempt भी कर दिया ना, तब भी आपको गिफ्ट दूंगा। मेरी इंटेंशन देने की है, my intention is not to block. I just want you to reach out to it. Reach out. Increase your level. Push yourself. You're almost there. But confusion में we don't need to spend more time. Confusion खत्म. Confusion खत्म, calm start. Confusion खत्म, calm start. That's what I wanted to tell you, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Thank you for being so patient, so enthusiastic. I see your enthusiasm. It gives me so much energy. You have no idea. No idea. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Good night.